I'm wearing full on black, man. It's absorbing like crazy. Come on, give way. Thank you. Woo! That backfire is sexy. So right now I'm heading to X-Torque. That's the place where I'm going to install my radiator guards. So as you guys saw in the video, so this is the radiator guards I was talking about. This is from R&G, you can see. So basically this I'm going to fix it today on my bike. So this is the R&G radiator guards. This is radiator guard, and this is basically oil coolant, guard. So basically there are two parts which will be like fit on the bike. So let's go and let's see how it's done. So I just unboxed it before this video itself for checking everything is right. So yeah, I picked it up yesterday, so today I'm going to fix it. So let's go. That was my R&G radiator guards. I just bought it like day before yesterday. So today I'm going to install it on the bike because this week I'm planning to go somewhere out on a long ride with some few other riders. So let's see, hoping for the best. And that time I don't want any stones or any chipping to it on my radiator and destroy it. For the protection for that, I'm using the R&G radiator guards. It costed me around 10 grand. Yeah, it is very expensive for that material, but what to do, मिलता हुई है, दूसरा कंपनी उसको बनाता नहीं है. ओल्ड मॉडल मिल जाएगा भाई, नया मॉडल नहीं मिलता, जो 2 पीस आते हैं नया मॉडल में. तो इसका यही है, R&G का every product from R&G is expensive. You take a tail tidy, man, it's 14,000 just a tail tidy. That's how expensive R&G products are, because they make quality, and quality तो सब में होता है, within उनके पास ही है प्रोडक्ट. तो क्या करें, मजबूर है लेने में, तो ले रहा हूँ बस. क्योंकि दूसरा कंपनी और भी कंपनीज हैं पर वो इंडिया में नहीं मिलती है. तो वही, तो अभी जो मैं बोला कि X-Torque जा रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं कि वो अभी खुला है कि बंद है, क्योंकि उसका टाइमिंग्स मैंने ध्यान नहीं दिया. चलो फिर जाके देख के आते हैं. अगर बंद है तो कल, नहीं तो फ़ोन करके पूछते हैं कब खोलेगा, उसके बाद तब जाके बदलवाएंगे. नहीं तो दूसरा दुकान में भी ट्राई कर सकते हैं. फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं X-Torque. चलिए पहले जाके देखते हैं वो खुला है कि बंद है. सो लेट्स गो. सो अनइवन, आपको वीडियो पे ही दिख जाएगा कितना रोड घटिया है. मतलब देखिए ना, दिस इज नॉट मेंट टू राइड, मैन. क्रेजी, फुल ऑफ बम्पीनेस. इट्स लाइक दिस, चिक 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 चिक. ऑन टॉप ऑफ इट, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड. आई डोंट नो व्हाट्स द टेम्परेचर आउट, बट देन इट्स बहुत गर्मी है, बहुत. लगता है मैंने जो ब्लैक पहनी है ना, उसके वजह से बहुत मेरा और भी मतलब गर्मी लग रहा है अंदर. ग्लव से लेके मेरा पूरा जैकेट गर्मी है, मतलब ब्लैक है, काला काला, तो अब्जॉर्ब कर रहा है हीट को बस. पर है बॉस, गर्मी है बाहर. तो ये है कल्याण नगर बेसिकली. If you take left from here, you go to X-Torque. So if you guys are having a super bike, you can just go and have a visit. You can just go and see what he's up to and what the company is for.
सो बेसिकली दे डू सुपर बाइक मेंटेनेंस, सर्विस से लेके सब कुछ करते हैं वो लोग। तो वैसे भी आप लोग को मालूम हो जाएगा। चलिए फिर देख के दिखाता हूँ आपको क्या क्या है वहाँ पे। हाँ, मेरी कल बात हुई थी उसका ओनर से, और मैंने बताया कि मेरे को रेडिएटर गार्ड्स लगाना है, आ जाऊँ क्या? तो उसने बुलाया आज, तो जाके देखते हैं। पर मेरे को मालूम नहीं कि अभी खुला है कि नहीं। अभी बज रहा है 11 बजे, इट्स 11 o'clock and it should be open. Let's go see, check it out. I'm not sure about that. It's very hot. मैंने तो एक्सट्रॉर को क्रॉस करके आ गया, भूल गया। It is just left behind, so I'm taking a U-turn. So here it is, guys. This is X-Talk I was talking about. Look at this mighty Hayabusa, fat tires. It's a Delhi registered bike. I'll show you guys in a bit. यही है जो बाइक मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ। मेरा बाइक में भी जो फैट टायर्स है वो भी मैं करूँगा बहुत जल्दी। लुक सेक्सी मैन। रेडिएटर गार्ड्स लगा, रेडिएटर गार्ड्स। मैं बात किया था। डाल दो अंदर। So this is the service area where they service all the bikes. Ducati Devil, Ducati Monster. Intruder, man, neon green, looks good but very huge. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape.
till the sunrise. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life, and say hello to the desert sky. These open highways are